गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या होता है सीक्वेंस, क्या होती है सीरीज और इसके बीच में डिफरेंस। तो आइए देखते हैं क्या होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज अ फंक्शन विच मैप नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमारा जो डोमेन होगा हमारा और नेचुरल नंबर होगा, यानी डोमेन ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू n and range of sequence equal to r, where n equal to 1 2 3 ... and r equal to minus infinite ... -2 ... -1 0 1 2 3 ... infinite is known as natural number and real number. Let a function fx equal to xn, where n belonging to n and fx belonging to r. So set of all fx at all n belonging to n. So xn equal to x1 x2 x8 ... xn. In this sequence, the x1 and x2 ... xn ... are unique in this sequence. इस सीक्वेंस में किसी भी नेचुरल नंबर के लिए उसका मैप जो होता है, उसकी इमेज जो होती है यूनिक होती है उस सीक्वेंस में. शो बी concludes that the maps are not repeated any element in this sequence. x1 x2 ... xn are called element or terms. ठीक, इसे एलिमेंट या टर्म्स कहते हैं. एज एग्जाम्पल, और इसे सीक्वेंस को एंगुलर ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं. ठीक, इसे एंगुलर ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं. ठीक, एज एग्जाम्पल xn equal to 1 minus n, where n belonging to natural number. So xn or un equal to 1 by 1 1 by 2 1 by 3 ...
1 by n dot dot dot, where 1 by n, 1 by 2, 1 by 3 belong to R. Show un is sequence, because in this sequence the maps are not repeated and this is belonging to R, यानी इन सभी एलिमेंट R में बिलोंग करते हैं. शो द सीक्वेंस द टर्म्स आर इज सीक्वेंस. And second is un minus 5n, where n is belonging to capital N. Show minus 5 minus 10 minus 15 dot dot so on. एंड फिर देखेंगे हम सीरीज क्या होती है. सीरीज इफ un u2 u3 dot dot un are real number, then is called a series. If the series have finite number, then series is called finite series, and if the series have infinite series, then this series is called infinite series. In series the term with operation, but in sequence without operation. ऐसे देखेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल के तरीके से sigma 1 by n, n belonging to 1 to infinite. So 1 by 1 plus 1 by 2, 1 by 3 dot 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 1 by n dot 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 is called infinite sequence. If sequence series has finite number, so this series is finite series. अब देखेंगे हम सीक्वेंस के टाइप ऑफ सीक्वेंस. तो सीक्वेंस के टाइप 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. A sequence action, let a sequence action is called convergent if limit n tending to infinite xn is a finite number, finite quantity. Show
then the sequence is called convergent. आप देख रहे हैं कि यदि कोई सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, कब होगा कन्वर्जेंट? जब उस पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मान एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है, तो उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। एज एग्जाम्पल अभी हमने देखा un sequence un equal to 1 by n. We find limit n tending to infinite un की वैल्यू रखेंगे n tending to infinite 1 by n infinite equal to, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, a finite quantity. Show the sequence un is convergent. अब देखेंगे हम डाइवर्जेंस सीक्वेंस कहते हैं। हम देखेंगे डाइवर्जेंस सीक्वेंस किसे कहते हैं। लेट a sequence action is called divergent if and only if limit n tending to infinite action equal to plus infinite or minus infinite, then sequence action is called divergent sequence. Example action equal to sequence action equal to 2 की power n. Then we find limit n tending to infinite action, limit n tending to infinite 2 की power n. We put n equal to infinite, 2 की power infinite equal to infinite. Show the sequence action is divergent. आपने देखा कि यदि वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा जिसकी लिमिट हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे और वह उसकी लिमिट जो है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी, तो वो सीक्वेंस कहलाएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। हमने एग्जाम्पल के तरीके से लिया 2 की पावर n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। सो द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट सीक्वेंस हम लेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। A sequence action
is called oscillatory if it is neither convergent nor divergent। यानी ऐसा सीक्वेंस जो कि ना कि डाइवर्जेंट हो और ना ही कन्वर्जेंट हो कहलाता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। दैट इज एग्जाम्पल सीक्वेंस एक्शन। we put n equal to 1 2 3 dot dot dot, then we find 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1। आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस में ऑसिलेट कर रहा है, बार बार वही मान प्राप्त होता है। -1 plus 1 -1 plus 1 -1 plus 1। So we said that the sequence is oscillatory sequence। तो हमने आज देखा कि कोई सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है।